In the previous video, we have completed the human endocrine system. किससे बनी हुई है? That is the endocrine glands present in the different body parts. And now in this video, we are going to learn the hormones of hypothalamus. Hypothalamus कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है and how it regulate the pituitary. Pituitary को कैसे रेगुलेट करता है, कैसे मैनेज करता है. That is the part of discussion of this video. So हमें पता है कि रिगार्डिंग हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, एंड जिसे हम फोरब्रेन को कहते हैं डायनेसेफेलस. दूसरा काम क्या करता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन. हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन वाइड स्पेक्ट्रम रेगुलेट करता है. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाइपोथैलेमस कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, and these neurosecretory cells produce the hormones, and उसे हम कहते हैं hypothalamic hormones. उन हार्मोन्स का हमारे बॉडी में क्या रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहा रिगार्डिंग हाइपोथैलेमस? कि कहाँ है? इट इज लोकेटेड और इट इज द बेसल पार्ट ऑफ इसका फोरब्रेन. हमें पता है कि फोरब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. कौन से? नंबर 1 सेरेब्रम, सेकंड थैलेमस, एंड थैलेमस के पीछे एट द बेस दैट इज हाइपोथैलेमस. सो इट इज द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन. फोरब्रेन को दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? कि फोरब्रेन इज आल्सो नोन एज डायनेसेफेलॉन. So first point regarding hypothalamus, it is the basal part of the forebrain. Second क्या करता है? It regulates बहुत सारी, मतलब वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन. हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है. इसलिए मैंने लिखा कि इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कंटेन्स, क्या है? इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ किसके सेवरल ग्रुप? सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. And that is important. Several group of neurosecretory cells, and उसे क्या कहते हैं? Called as nuclei. उसे क्या कहते हैं? Called as nuclei. And these produce the hormones. These produce क्या कहते हैं? Which produce the hormones. And उस hormones को हम क्या कहते हैं? We call it as hypothalamic hormone. So that is important. क्योंकि हमने लिखा है हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस. तो थर्ड इज इंपॉर्टेंट, इट कंटेन्स द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लिया, एंड दिस सेल्स प्रोड्यूस द हार्मोन्स, और उस हार्मोन्स को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. अब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स क्या करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस? उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन. तो फर्स्ट फंक्शन इज, इसका फंक्शन है इट रेगुलेट. क्या रेगुलेट करती है? इट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स. मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की जो भी हार्मोन्स है उसको रेगुलेट करती है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. क्या है? इट रेगुलेट द सिंथेसिस and secretion of hormones
किसके? हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पीजी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करना, ये रेगुलेट करने का काम ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स करते हैं। So these hypothalamic hormones is play a very important role. And then pituitary gland, as per the suggestion given by hypothalamus through the hormones, दूसरे ग्लैंड से काम करवा के देती है, right? And therefore we call the pituitary gland is a master gland. But pituitary gland किसके हिसाब से चलती है? Hormones of hypothalamus, right? So very important. Then कि जो hypothalamus के जो hormones है, these are of two types. One is releasing hormone and second one is inhibiting hormone. Releasing hormone मतलब वो stimulate करती है for the synthesis and secretion. And inhibiting मतलब वो inhibit करती है pituitary gland को for the release of hormones. Right? So there are two types of hormones. Hypothalamic hormone जो है वो दो टाइप के हैं. Number one कौन से? Two types. Number one releasing hormone. Releasing hormone. Yes for hormone. And then it is inhibiting hormone. Releasing hormone and inhibiting hormone. Releasing hormone मतलब क्या है? Releasing hormone मतलब it stimulates the secretion of pituitary gland from it stimulate करती है. Releasing hormone मतलब क्या है? These hormones these hormones stimulate the pituitary gland for the synthesis and release of hormones. क्या करती है? रिलीजिंग हार्मोन्स दो टाइप बोले तो क्या करती है? इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। रिलीजिंग मतलब इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कितना भी लिखा तो भी चलेगा, राइट? इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेट द secretion of pituitary gland. Right? Releasing, stimulate करेगी. Inhibiting word itself indicates it inhibit. यहाँ पे क्या करती है? Stimulate. It inhibit the secretion of pituitary gland. It inhibit the secretion and release of pituitary gland. दो. अब रिलीजिंग हार्मोन के एग्जांपल कौन से हैं? तो रिलीजिंग हार्मोन के बेस्ट नोन एग्जांपल इज GnRH. These are the hypothalamic hormones produced by hypothalamus. Enter it into the pituitary gland. क्या करती है? Stimulate the secretion of pituitary gland. कौन से? For the gonadotropins. So GnRH, gonadotropin releasing हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है? दीज आर द रिलीजिंग हार्मोन. कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस. कहाँ आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में. एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में आने के बाद कौन सा काम करेगा? इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स. ये क्या करेगा? स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी फॉर स्टिमुलेट द पिट्यूटरी फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ क्या? दैट इज द गोनाडोट्रोपिन्स. देन पिट्यूटरी ग्लैंड. ये हार्मोन्स आने के बाद ही पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ gonadotropins, and these gonadotropins enter into the blood and reach to the target organ. टारगेट ऑर्गन के पास चले जाएंगे.
कौन सा टारगेट ऑर्गन होगा? टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल, एंड वहां काम स्टार्ट करेगा. सो दिस इज व्हाट रिलीजिंग हार्मोन. नाउ सेकंड वन इज inhibiting hormone. क्या कहा? It inhibits the secretion and release of pituitary gland. एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल है somatostatin. This is the hormone which inhibits. This is the hormone released from the hypothalamus जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है, इसलिए उसको कहा है इनहिबिटिंग हार्मोन. क्या करता है? इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. क्या करता है? इट इनहिबिट्स यानी रोकता है. इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ कौन सा? ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. तो आपको दो एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे. सो वंस अगेन आई विल रिव्यू. Hypothalamus contains the several group of neurosecretory cells called nuclei, and these neurosecretory cell produce the hormones. उसे कहते हैं hypothalamic hormones. उसका काम क्या है? It regulates the synthesis and secretion of hormones of pituitary gland. Pituitary glands को hormones को synthesis and secrete करने को regulate करती है. Hypothalamic hormone is of two types. First one is releasing hormone. Second one is inhibiting hormone. ये क्या करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं. इसका एग्जांपल है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा तो ये क्या करेगा? इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ gonadotropins, and then through the blood gonadotropins will reach to the target organ. वैसे ही ये क्या करता है? इट इनहिबिट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन एंड रिलीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इनहिबिट करता है, रोकता है. एग्जांपल सोमैटोस्टैटिन. क्या करता है? जैसे ही सोमैटोस्टैटिन पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिट कर देगा. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. अब देखो इसके ऊपर क्या है कि विल डिस्कस इट इन मोर वेज. और एक अलग वे से हम इसको डिस्कस करेंगे. तो कैसे हार्मोन्स आता है? तो देखो इसका मैं डायग्राम निकालता हूँ कि हाइपोथैलेमस कहाँ है. तो हाइपोथैलेमस ऐसा है. हाइपोथैलेमस इसको मैं लेबल करता हूँ हाइपोथैलेमस. उसके बेस पे यहाँ पर देयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस में क्या है? तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है. दैट इज द एक्सॉन. एक्सॉन सेल बॉडी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है. यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स आर लोकेटेड है. यहाँ पर भी एक न्यूरॉन है. अब देखो these neurons, ये जो न्यूरॉन्स है हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस द हार्मोन्स and through the axon, through the nerve ending, axon and nerve ending इसको लेबल करता हूँ axon and इसको लेबल करता हूँ ये जो है these are the nerve endings. Right. Hormones produced by the neuron passes through the axon. Axon से पास होगा and through nerve ending it enters it into the pituitary gland. That is the anterior lobe of the pituitary gland. But कैसे? No direct regulation. It passes through the
पोर्टल सिस्टम, यहाँ से कैपिलरीज आती है, यहाँ पे इट मेक्स द नेटवर्क एंड फिर से छोटी बनती है एंड दीज हार्मोन्स इसके अंदर चले जाते हैं. These hormones enter through the nerve ending into deep blood, and through blood it enter it into the blood. So this is known as hypophyseal portal system. क्या कहते हैं? We called it as, उसे कहते हैं, लेबल करते हैं हम यहाँ पे, we called it as hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system. Right? मतलब how the hormones produced by the hypothalamus enter into the anterior lobe of the pituitary through hypophyseal portal system. ये कैसे सिस्टम है? Enter it into the blood and through that blood enter it into the pituitary gland. Right? दूसरा जो है कि hormones produced by these, they are under direct neural through axon, no portal system, enter it into the pituitary. And this is the posterior part. तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हमें आगे भी लर्न करना है. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस थ्रू एक्सॉन, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन यहां से थ्रू पोर्टल सिस्टम. सो दीज आर द टू वेज कि जहां से हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन पिट्यूटरी में आते हैं. दिस इज हाइपोथैलेमस, न्यूरॉन्स, एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स, hypophyseal portal system and anterior, ये posterior लोब में डायरेक्ट एक्सॉन एंटर होता है, मतलब इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, नो एनी अदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द hypothalamus. In the next video we'll discuss the hormones of the pituitary and its structure.